And let's begin by getting you all the latest updates on the investigation into the Hanuman Jayanti riots that broke out in the national capital. The Delhi police now are focusing on identifying and nabbing every single rioter who is involved. On Monday, shooter Sonu Sheikh was nabbed by the cops after an extensive hunt. Sonu's video firing a gun had surfaced after the Saturday violence when he was seen walking up amid the mob and using his weapon. With Sonu, the total number of arrests now stand at 25. Another arrested accused has reportedly confessed to supplying glass bottles to rioters to throw at the procession. Security has been stepped up now in the area. For the last 3 days, we've been seeing heightened security. Today it remains the same. Home Ministry has deployed 3 additional companies of CRPF. A total of 15 CAPF companies are also deployed, particularly because there was a fresh bout of pelting that was reported yesterday. On Monday, the Delhi police registered a case against the organizers for carrying out a procession without permission on Saturday, the 16th of April. One of the leaders of the VHP, Prem Sharma, has reportedly been arrested. देखिए, टोटल अगर आज तक की गिरफ्तारी की बात कहें तो 24 हुई है, जिसमें 24 में 2 एप्रीहेंशन है, जो 2 जुवेनाइल्स हैं, और बाकी जो 22 हैं जो गिरफ्तारियां हुई हैं, इसमें जो भी आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं, यानी कुल मिलाकर जितने लोग रिवॉल्वर या कुछ उस तरह की चीजें लेकर सामने दिखे हैं, उन सब की गिरफ्तारियां हो गई हैं. 2-3 और बचे हुए जिस पर हम काम कर रहे हैं. The Delhi police are investigating a larger conspiracy angle in the Saturday Jahangirpuri riot case. 2 prime suspects, Ansar and Aslam, were produced in court and were sent to police custody. The Delhi police, meanwhile, has been accused of being partial in their investigation by a petition made by a lawyer in court. The letter petition moved before the Chief Justice of India, N.V. Ramana, to take up suo motu cognizance of the riots and alleged that the Delhi police investigation so far had been partial, communal and directly shielding perpetrators of the riots. ये बिल्कुल गलत बात है. हमने जितने लोगों को अरेस्ट किया है उसमें दोनों पक्ष के लोग हैं. जिन लोगों ने वहाँ पे उद्दंड किया या कायदा अपने हाथ में लिया, वो किसी भी पक्ष के नहीं हो. हम तो उनको जो आरोपी के तौर पे ट्रीट करते हैं और उसी तरह की कानूनी कार्रवाई आगे करते हैं. Delhi police went to Jahangirpuri on Monday for further investigation. One of the prime suspects, as per the crime branch investigation, Sonu, who shot from a pistol, has since been arrested. Sonu was caught on camera firing from a pistol at a crowd. The Delhi police apprehended his wife on Monday. हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो रहा तो वो रोजा खुलने का टाइम हो गया, कोई बच्चा से वो ये छीन के वो गुस्सा में वो चलाने लग गया, तो किसी को चोट नहीं लगा, कुछ नहीं लगा. ऐसे धमकी दे रहा. जब बजरंग बली सब आया मानने को, तो हमारा लड़का उसको होते डर देने के लिए ऐसा बंदूक चलाया. Riots broke out on the eve of Ram Navami and Hanuman Jayanti on the 16th of April. The Delhi Police Crime Branch took over the investigation. More than 20 people have been arrested, including 2 juveniles. 10 teams of sleuths are scanning through more than 200 videos of the clashes and all evidence collected so far. The northeastern part of Delhi had last witnessed a major riot in March 2020. Bureau Report, India Today. India Today has conducted also a detailed investigation on exactly how this violence, how the riots in Jahangirpuri began. Our next report gets you more details on that. Delhi's worst communal violence in 2 years. Clashes during a Hanuman Jayanti procession in the national capital. As police swing into action, conduct searches and make arrests, India Today carried out a discreet probe on hidden camera. We captured candid revelations about how it might have started at Jahangirpuri on Saturday. This is Raja, a resident of the riot-hit neighborhood. Unaware, he is being filmed. Raja gave his own account of how rioting unfolded
at Jahangirpuri on Saturday. वीडियो बना रहे सब सारे मुसलमान सब खाए तो रास्ता दिया हमने बात आएगा नहीं आप लोगों ने पहले पानी वानी भी पिलाया हाँ सब कुछ किया गले मिलाया हम लोगों ने उनसे हाथ मिलाया एकदम बाइज्जत हमको हमने उनको जाने दिया फिर क्या कोई दिक्कत नहीं हुई फिर ये लोग कुछ ज़्यादा लोग में तादाद हो गए थे कि और यहीं बजाएंगे हम और यहीं वो करेंगे फिर देखो बाकी पेट्रोल लगाया और ये झंडा वंडा भगवा झंडा फहराने की कोशिश की थी ऊपर भगवा झंडा फहराने की कोशिश की हाँ कोशिश की थी बस फिर आपस में हो गया फिर पता नहीं कौन लोग थे क्या करके क्या चक्कर हर साल जाती है इनकी रैली हर साल कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुआ इस बार 4-5 दिन माहौल बनाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम यहाँ हो आज क्या हुआ ये लोग अचानक से आए जब यहाँ बजाने लगे कुछ लोगों ने मना किया था तो फिर हम यही पत्थर मारने लगे धक्का खाने लगे अगर आपको कोई धक्का मारेगा आप वैसे खड़े रहोगे तो आप भी धक्का ही मारोगे तो धक्का क्यों हुआ कुछ लोग यहाँ से भी आ गए ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गया तो भगदड़ हो गया तो पुलिस आ गई उससे पहले पुलिस नहीं थी रैली में पुलिस नहीं थी एक भी पुलिस नहीं थी ये रैली में एक भी पुलिस आप नहीं देख पाओगे इसमें रैली में ये लोग तो डंडे और ये डंडे नहीं चाकू तलवार डंडे का ही होगा बाकी सब चाकू तलवार और वो साउथ के फिल्म में जैसा हथियार दिखाते हैं ना वही Raja shared the video he said he had himself filmed during Saturday's procession. Slogan shouting marchers carrying unsheathed swords and other sharp-edged weapons could be seen in the footage. And our reporter captured this on his camera. Flags lying scattered at the mosque gate and around. This is Karan, a participant in Saturday's Hanuman Jayanti procession at Jahangirpuri. And this is what he admitted. पत्थर मारने के बाद में जैसे मस्जिद के पास में अगर रुक भी गए ब्रेक ले लिए ठीक अगर जय श्री राम के नारे लग गए तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं से कहीं तक की भी पत्थर फेंकने का मतलब क्या बनता है बैठ जाओ नहीं बैठो सर बैठ जाओ सर प्रॉब्लम क्या होती है इस चीज़ से उसके बाद में पत्थर मारने के बाद में भारी तकाज से इधर से भी और उधर से भी पत्थर चल रहे हैं पत्थर चलने के बाद में शिव लोग से और मस्जिद की साइड से भी पत्थर चल रहे हैं पत्थर चलने के बाद में जितने पब्लिक के सारे हो गए ये सब 4 से 5 लोग लेकर चले गए बोतल पत्थर सर पेट्रोल भी फेंका है पेट्रोल वाली उनमें भी आग लगाई है इनसे भी ये तो सर पहले से ही प्लानिंग थी हमारा तो नहीं हमारे ठीक ठाक हाँ हम ही थे क्या हुआ था क्या बताओ सबको देख ही रहे हो सुन ही रहे हो अचानक मस्जिद से पत्थर मारना स्टार्ट कर दिया मस्जिद से 2 घर छोड़ते ही पत्थर आ रहे हैं ठीक और बोतलें आ रही है ठीक एकदम से इतनी पब्लिक आकर के ऑब्जेक्शन उठाती है अगर मस्जिद के सामने अगर नारे लग भी गए जय श्री राम के तो क्या बुराई होगी मेरे को एक ये बता दे कि अल्लाह नाराज हो गए उनके कानों में दर्द हो रहा है कोई प्रॉब्लम हो रही तो बताओ ऑब्जेक्शन उठाओ ना तुम इस चीज़ का तुम्हारे तरफ से पथराव हुआ सर हम क्यों नहीं करेंगे जब हमारे पे कोई करेगा हम गांधी जी के वक्त तो है नहीं क्योंकि एक मारो दूसरा काल आगे कर दो शोभा यात्रा यहाँ से निकली यू राउंड फिगर हुई यू राउंड होने के बाद में इस रोड को छोड़कर अगला रोड है सी और बी का वहाँ से निकली टर्न होते के साथ ही यहाँ आई मस्जिद के पास में रुकी हुई 2 सेकंड की रुकी जय श्री राम के नारे लगे ऊपर से पथराव चालू जाते समय इन्होंने पानी भी पिलाया अच्छा हाँ जाते समय पानी पिलाया A riot that scarred the national capital yet again. Yet another desecration of constitutional values in the name of religion. A report by Nitin Jain and Mohammad Hizbullah for India Today's Special Investigation Team. Now, we've been telling you what happened in Delhi. The reality is that in the last 15 days, we've seen stone pelting, arson, unprecedented violence. And it's not been limited to the national capital. It all started with Karoli in Rajasthan on 2nd April, where a procession celebrating the Hindu New Year was allegedly pelted with stones. Next came Ram Navami and now Hanuman Jayanti processions. Similar allegations of stone pelting, similar aftermath of violence and arson
And the question everyone's asking right now is whether there's a pattern really to these communal clashes and who's attempting to disrupt peace in India. Violence, stone pelting and arson. Across states, unrest and disturbance in the last 15 days. Clashes reported during Hindu religious processions. It started on April the 2nd in Karoli after stones were allegedly pelted at a rally on the occasion of the Hindu New Year. Over 42 people were injured. 8 days later, on Ram Navami, violence erupted in Madhya Pradesh, Gujarat, Jharkhand and Bengal. Processions were allegedly pelted with stones, resulting in clashes between two religious communities. The situation rapidly spiraled out of control. Local shops and vehicles were torched. In Madhya Pradesh, fingers were pointed at the radical Islamist outfit, the Popular Front of India. जिन लोगों ने शांतिपूर्वक रामनवमी के पर्व पर उस जुलूस पर पथराव किया, बहन बेटियों पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लोगों ने आगजनी की योजनाबद्ध तरीके से, तो क्या दिग्विजय सिंह को कांग्रेस इनका समर्थन करती है? The same evening, two groups of students clashed at the Jawaharlal Nehru University in Delhi, allegedly over serving non-vegetarian food in the hostel on Ram Navami. On the 16th of April, communal clashes broke out during a Hanuman Jayanti procession in northwest Delhi. Swords, pistols were brandished, stones were pelted as the rally neared a mosque. जितने लोगों को अरेस्ट किया है उसमें दोनों पक्ष के लोग हैं। जिन लोगों ने वहाँ पे हुड़दंग किया या कायदा अपने हाथ में लिया वो किसी भी पक्ष के नहीं हो, हम तो उनको जो आरोपी के तौर पे ट्रीट करते हैं और उसी तरह की कानूनी कार्रवाई आगे करते हैं। Hanuman Jayanti clashes were also reported from Hubli in Karnataka, Kurnool in Andhra Pradesh and Haridwar in Uttarakhand. The question is there a pattern to all of these clashes? How are rioters prepared with all these weapons? Are stones collected and hoarded? Is a flare-up always pre-planned? And how is it that they're happening all over the country? Is there a deliberate attempt to provoke? What's the intent? What's the objective? And why is India being divided? Bureau Report, India Today. Let's move on to some other stories also that we're tracking this Tuesday morning. In Maharashtra, the use of loudspeakers by mosques is again mired in controversy. Uddhav Thackeray's government is working hard with the police and with different communities to maintain peace in the state. Here are the details of the latest directive from the government. The call of the muezzins to the faithful is under the scanner. The Maharashtra government, along with the minority community, is battling tough to allow Azaan and use of loudspeakers by mosques with permissible limits. इसके बारे में राज्य के पुलिस महासंचालक और मुंबई के कमिश्नर ये दोनों मिलकर बैठकर एक निर्णय लेंगे, गाइडलाइन तय करेंगे और ये गाइडलाइन अगले 1-2 दिन में इशू होगी और उसी के तहत सबको इसकी अमल गुजारी करना है। स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन या ये तनाव पैदा करने की जो सिचुएशन है उसके ऊपर हम ध्यान रखे हुए हैं। The Maharashtra government plans to make it mandatory for religious sites to seek permission for the use of loudspeakers. Nashik police has already issued an order making it mandatory to take permission for loudspeakers. Maharashtra DGP has been directed to hold a review meeting with district administrations for implementing the order. जितने भी धार्मिक स्थल हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर और अन्य धार्मिक स्थल, उन सारे जगहों को 3 मई 2022 पर्यंत पुलिस आयुक्त की परमिशन लेनी होगी और इसके लिए जो साइलेंस जोन और रेजिडेंशियल जोन, कमर्शियल जोन और इंडस्ट्रियल जोन है, उसके अंतर्गत डे टाइम और नाइट टाइम में
जो नॉइज लेवल परमिसिबल है उसके हिसाब से उनको हर एक धार्मिक स्थल को जो परमिशन दिया जाएगा उनके मेरिट्स पर लाउड स्पीकर के लिए, तो साथ ही साथ वो कितने डेसिबल तक का आवाज उससे निकाल सकते हैं इसकी भी उसमें मर्यादा निश्चित की जाएगी। The Supreme Court directed rules for the permissible limit of noise is going to be the backbone for Maharashtra government's directions in this regard. The Apex Court directives allow 65 decibels during the day and 55 decibels in the night in commercial zone. For residential area, 55 decibels in the day and 45 decibels in the night is acceptable. But for the silence zone, the limit in the day period can't cross 50 decibels, while for the night, the maximum limit is 40 decibels. The Apex Court has also limited the use of loudspeakers from 6 in the morning till 10 in the night. 2 जमातें कर दी हैं, जुमे की भी 2 जमातें कर दी हैं और ईद की भी 3 जमातें कर दी हैं, और बाहर की जो माइक पर जो नमाज चलती थी वो इस साल से हम उसको बंद कर देंगे ताकि 3 जमातें लोग इत्मीनान से आकर के मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़े। Members of Aman Committee in Mumbai City are urging ulemas to keep the audio level down within permissible limits. हमारी जो बड़ी मीटिंग हुई थी उसमें सीपी साहब को कहीं कुछ जगह से कंप्लेंट्स आई थी, कुछ इलाका उन्होंने उनको कॉन्टैक्ट किया था, तो हम वहाँ के लोगों को, वहाँ की कमेटियों को यहाँ बुलाया, रस्सियों को यहाँ बुलाया था सेकंड थर्ड डे, तो उन्होंने ऑलरेडी वहाँ पर कमती कर दिया था। हमने कहा हम खुद चेक करेंगे, तो उन्होंने रात में जाके हमने चेक भी किया, उस वॉल्यूम को हमने फिर अपने उसमें मोबाइल में लिया भी। हमारे भाइयों को, किसी भी गैर मुस्लिम भाई को तकलीफ होगी हम वहाँ स्लो नहीं करें, हम बंद भी करवाएंगे। The row over loudspeaker use escalated in the state after the Maharashtra Navnirman Sena chief Raj Thackeray raised the pitch, calling on Hindu brothers to be prepared if loudspeakers are not removed from mosques by 3rd May. With controversy around loudspeakers outside mosques and noise pollution, members of the Muslim community are also taking some efforts like reducing the volume of loudspeakers for Azaan to the permissible level given by the Supreme Court. And there are many other measures which are being also taken, like offering of namaz on the road is something which the community is looking forward to avoid. With camera person Raju Revankar, Mustafa Sheikh for India Today. Now, with all eyes on the Gujarat Assembly polls to be held later this year, Prime Minister Narendra Modi is on the 2nd day of his visit to Gujarat. It's a 3-day-long trip to his home state, and Prime Minister Modi today will visit Banaskantha at about 9:40 this morning, where he'll lay the foundation stone for multiple development projects at the Banas Dairy Sankul in Deodar, followed by which he's going to be attending an Adi Jadi Maha Sammelan in Deodar and also inaugurate various development projects worth 22,000 crore rupees in the afternoon. In the evening at 5 p.m, Prime Minister Modi will lay the foundation stone for a WHO Global Centre for Traditional Medicine. This is in Jamnagar. The WHO Trade Centre program will also witness the presence of 2 special guests, the WHO Director General Dr. Tedros Adhanom and the Mauritius Prime Minister Pravind Kumar Jugnauth. We'll be sure to get you every update on the Prime Minister's Day 2 in Gujarat. The war in Ukraine has entered its 55th day, and the offensive of Russia has reached Lviv, which is in western Ukraine, which witnessed multiple airstrikes on Monday. 7 people were killed in these airstrikes, while multiple others were also injured. Kharkiv, another city that witnessed a massive strike with 2 people dying in shelling, multiple vehicles were also damaged. In Irpin, where Russian troops have retreated, mass graves show the severity of the kind of destruction, the death toll, the tragedy that's unfolding at a once bustling city. Russia has claimed to be close to capturing Mariupol completely. The besieged city is completely now a ghost town. Dead bodies are seen lying across the ground. In recent days, Russia shifted its focus towards eastern Ukraine and is preparing to launch a full-blown offensive in the rebel-held Donbas region. Ukrainian forces are putting up valiant resistance in the face of Russian aggression, but Putin has shown no signs of backing down. Talking about the Western sanctions, Putin claimed that the West has hurt itself. He said that by imposing sanctions against Russia, the West has completely deteriorated their own economies.